Hello and welcome live from New Delhi. You're watching DD India Live, India's voice to the world. I'm Gautam Roy, and coming up in the next 30 minutes, Prime Minister Narendra Modi gives astronaut wings to 4 test pilots for India's first orbital mission in space called Gaganyaan. Says the nation will have its own space station by 2035. India's United Nations envoy asks why the UNSC is completely ineffective in resolving the Russia-Ukraine conflict, presses for reforms. Macron proposes and Scholz disposes as the Kremlin warns that conflict between Russia and NATO would be inevitable if the military alliance's European members send troops to fight in Ukraine. And US President Joe Biden says Israel has agreed to stop military action in Gaza for Ramadan as Hamas studies a proposal for a temporary truce with hostage prisoners swap. Now, India's Prime Minister Narendra Modi visited the southern state of Kerala today. During his visit, the Prime Minister inaugurated 3 important space infrastructure projects worth around 1,800 crore rupees at Vikram Sarabhai Space Centre in Thiruvananthapuram city. The projects include the SLB integration facility at the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, the new semi-cryogenics integrated engine and stage test facility at ISRO Propulsion Complex in Mahendragiri, and trisonic wind tunnel at VSSC in Thiruvananthapuram. And while addressing the event, the Prime Minister praised the role of women in India's space program. आज यहाँ अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। And the Prime Minister also reviewed the progress of the Gaganyaan mission and bestowed astronaut wings to the 4 astronaut designates. Gaganyaan mission is India's first human space flight program for which extensive preparations have been going on at various Indian Space Research Organization centers. And addressing the gathering, the Prime Minister praised the 4 astronaut designates as well, selected for the Gaganyaan mission. ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है।
Furthermore, the PM also addressed a huge public gathering of the Bharatiya Janata Party in the southern state of Kerala. While addressing the gathering, the PM stressed upon development of the state that has been the centre's priority. The PM also mentioned about the benefits that people of the state have been getting from public welfare schemes. आज केरला के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए यहां के लोगों को करीब 5,500 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। केरला के 36 लाख से अधिक घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा मिली है। केरला के 40 लाख किसानों को सम्मान निधि के रूप में सीधी आर्थिक मदद मिली है। राज्य में 50 लाख से अधिक मुद्रा लोन बांटे गए हैं। Now, Prime Minister Modi, after his visit to Kerala, is on a visit to Tamil Nadu, another southern state. The Prime Minister addressed a huge public gathering of the BJP in Tirupur city. At the venue, he received a warm welcome with the people chanting his name. The PM expressed his gratitude to Tamil Nadu and its people for the immense support that he got. And the PM will also be addressing thousands of micro, small and medium enterprises entrepreneurs working in the automotive sector in the southern city of Madurai. That's again in Tamil Nadu. Managing Director of TVS Automobile Solutions, Srinivas Raghavan, said that the PM's vision for Viksit Bharat is focusing on digital mobility, global supply chain and others will benefit lakhs of automotive entrepreneurs by accelerating interoperability among them. Prime Minister has laid out a vision, a Viksit Bharat by 2047. Towards achieving it, he has also laid out a vision of digital mobility, digitalization, skilling, global supply chain, Startup India, and in turn have the fintech mobility across the country. Automotive industry, which is a significant contributor to the GDP, comprises of lakhs of MSME entrepreneurs who have to be taken and carried along in order to help realize not only the future for them, but also for the country's growth as a whole. India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar welcomed Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand Dr. Parnpree Bahiddha-Nukara. Dr. Jaishankar and Thailand's Deputy PM chaired the 10th India-Thailand Joint Commission meeting in the national capital. This is the leader's first official visit to India, which is scheduled for 4 days. US President Joe Biden has said that Israel has agreed to cease military operations in Gaza during the holy month of Ramadan, while Hamas reviews a proposed truce that includes the cessation of hostilities and a prisoner-hostage swap. This draft proposal represents the most significant effort in weeks to resolve the conflict that began in October last year. Joe Biden said there was an agreement in principle for a ceasefire between the two sides if the hostages were released. He hoped for a ceasefire in the conflict by the 4th of March. Well, I hope by the beginning of the weekend. The end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire. Meanwhile, Qatar has declined to comment on the statement by Joe Biden that a ceasefire between Israel and the Palestinian militant group Hamas could be agreed next week. Qatar's Foreign Ministry spokesperson Majid Al-Ansari on Tuesday said there was no breakthrough related to a ceasefire and hostage deal. But he did say that Qatar is pushing hard for the agreement thrashed out in Paris to be accepted by both the sides.
India's External Affairs Minister Dr. S. Shankar has strongly condemned the terrorist attack perpetrated by Hamas on the 7th of October last year in Israel. He was virtually addressing the 55th session of the UN Human Rights Council. The conflict in Gaza is of great concern to us all. The humanitarian crisis arising from conflicts require a sustainable solution that gives immediate relief to those most affected. At the same time, we must be clear that terrorism and hostage-taking are unacceptable. It also goes without saying that international humanitarian law must always be respected. It is vital that the conflict does not spread within or beyond the region. And efforts must also focus on seeking a two-state solution where Palestinian people can live within secure borders. Staying with Asia, Thailand's opposition leader and former Prime Ministerial candidate Pita Limjaroenrat vowed his Move Forward party would win the war for its future amid legal threats that could see the pro-reform group dissolved and its leaders banned from politics. Pita led the Move Forward party to an election victory last May on an anti-establishment platform but was unable to form a government. Let's now take you across to an event which is unfolding right now with Prime Minister Modi there to encourage a lot of these MSME entrepreneurs as part of his Tamil Nadu trip. You can see these images that are coming in where a lot of efforts that have been made over the years by these entrepreneurs have been put up for the PM to get an assessment of, to get a look at, and that's what he is going through right now. And pretty soon he'll be addressing these people as well. This is in Tamil Nadu, where he has already been given a very warm welcome. He's addressed the people as well, and now he's turning to a very, very vital component of the industry there in Madurai, which is the automotive industry. Madurai is in Tamil Nadu and used to be a princely state at one point of time, but is now part and parcel of India and a hub of automotive activity. In fact, Tamil Nadu itself, a coastal state, has multiple hubs including Chennai, where the Indian automotive industry has flourished, and Madurai is also part of that. And that's where Prime Minister Modi is to speak to some micro, small and medium enterprise entrepreneurs. These are images that we've just got and we're playing them out for you, and pretty soon you'll be listening live to the Prime Minister's address here on DD India 2. The PM accompanied by the Minister from the state as well, and the representative of the automotive industry, who is taking the Prime Minister through all the displays that have been put up, which go back several years, decades really, as to how the automotive industry has progressed in this part of India. This is all part of the campaign, the Prime Minister's vision of Viksit Bharat, that is developed India for 2047, when the country completes 100 years of independence. And the PM is on a drive to ensure that happens, and he's engaging with different sections of society and industry for that purpose. Prime Minister Modi is on a two-day visit to two southern states. We've seen the Kerala leg, and we've brought you the highlights of what happened there in the course of this
edition of DD India Live as well. Now he is in Tamil Nadu, in the city of Madurai, where he is being part of this event which involves micro, small and medium enterprises, entrepreneurs from the automotive industry. And before that, through the day, we've seen him launching several initiatives worth thousands of crores, or amounting to hundreds of millions of dollars, if not billions. And this is all part of that exercise to ensure that India emerges as a developed nation by 2047, when India completes 100 years of independence. The PM has been in Tirupur, and now he is in Madurai, where he is addressing micro, small and medium enterprises entrepreneurs of the automotive sector in the city. And he is also participating in Create the Future Digital Mobility for Automotive MSME Entrepreneurs program. It's being reported that he will be launching two major initiatives here as well: TVS Open Mobility Platform and the TVS Mobility and CII Center of Excellence, which have been designed to provide a fillip to the MSME sector there and help them integrate with global value chains and become self-reliant. Later in the day, the PM is also expected to visit the Meenakshi Amman temple. You can see women also part of the entire exercise, and the Prime Minister has always stressed on the role of women. Even earlier in the day, he stressed on how women have played a vital role in the progress and the kind of advances that India's space sector has made. And now he's also met women entrepreneurs, and even school children have brought a fond gift for him. Let me bring in my colleague Anbarasan Elongo from Madurai on this visit of the Prime Minister. Anbarasan, we can see right now images of the Prime Minister receiving a portrait of himself from school children. But tell us about what is his visit to Madurai, to Tamil Nadu, to two southern states over the 2 days really about? Prime Minister is this today and tomorrow visiting Tamil Nadu, and after the Palladam meet, the public rally just now reached Madurai, at the MSME global automotive leaders
meeting is going to happen. And the Prime Minister, we can see that in fact, school children and the school children actually are present a photograph with the Prime Minister. And Prime Minister also interact with the global automotive leaders across the globe, a lot of industrial leaders as can. And also Prime Minister also interact with the students and the teachers from the Gandhigram Institute of Dindipal. And also Prime Minister, we can see that Prime Minister regarding this meet, particularly the MSME of automobile industry in Tamil Nadu, around 1,000 industrialists are reached here to, and Prime Minister is going to address this meet. And Prime Minister also going to inaugurate 2 open source platforms. Yes, go ahead. Yeah. Prime Minister also interacts with the business leaders of the automobile industry and this MSME entrepreneurs automotive sector. And also Prime Minister today going to inaugurate the School of Excellence of TBS and CII. This summit mostly focused on the interoperability of the MSME sectors of automobile industry. And Prime Minister in his Viksit Bharat 2047 address, he mentioned that the digital sector, particularly the digitalization of automobile industry and also the skill India, those kind of initiatives has been continuously focused. And regarding that, this meet also focused on that. And Prime Minister reached this summit and also is going to address the public gathering in this meet. And Prime Minister MSME sectors, particularly automobile industries, which is above Tamil Nadu, and also the significant contribution to the GDP. So Prime Minister, particularly MSME sectors for the automobile industry, is going to inaugurate the open source platform which synchronize all the MSME, small, medium and micro enterprises, which they will culminate all these people into a one source platform. After that, this inauguration, it gives an opportunity to all the entrepreneurs across the country, particularly automobile industry. They will came together and for the fund, for the financial help and also particularly knowledge transfer and technical support. These platform will be a synchronization of all this. And Prime Minister is going to address this meet soon in Madurai, where the TBS school in Karpa. Yes, certainly. Prasar, if you could tell us in terms of what kind of efforts have been made in recent years to ensure that the automotive sector, the MSMEs in Madurai and in Tamil Nadu prosper even more, because it has already been a hub of the automotive industry for quite a few decades now. But we are seeing a lot of progress if you look at the kind of numbers that the automotive sector has been generating in recent quarters. Yeah, essentially TVS, we can see that 1912 has been this TVS company has inaugurated in Madurai. It's a very independent organization, and in that, particularly in Chennai, Coimbatore, where we can see various MSME sectors, particularly regarding to the automobile industry. And also Prime Minister is tomorrow going to inaugurate various development program in Tuticorin that is also focused on the automobile sector. And this summit mostly focused on MSME sectors, cooperability in the organization between the MSME sectors of automobile industry. We interact with various participants and the global leaders of the industries earlier. And what they said that this meet, the Prime Minister visit will make more impact, and particularly this meet become a successful one. And also they said that meeting all the industrials from the across country, particularly from the MSME sector. We can see that majorly the GDP of the country, mostly in Tamil Nadu, from the MSME sector, particularly in the automobile industry. So this visit of Prime Minister Narendra Modi
to the state. It kind of gave a boost to the automobile sector. Particularly, TVS has playing important role in that for the organizing this meet. And this meet plays important role of open source platform as a digital mobility. So it accelerates digital mobility between the MSME sectors of the automobile industry. And also, there is a second TVS CII Center for Excellence. That is also Prime Minister going to inaugurate. All right. And we're going to be seeing, as you mentioned, a lot of different initiatives that the Prime Minister will be launching, also where the not just the automotive sector is concerned, but the overall progress of different facets of the economy as well. Now, we're getting these live images from Madurai of Prime Minister's public event. Let's listen in. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிடு தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க திரு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Once again, a very warm welcome to Honorable Prime Minister for gracing this momentous occasion, and a very warm welcome to our esteemed dignitaries on the dais and off the dais. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister will now be presented with an exclusive and very beautiful Tanjore painting by Mr. R. Dinesh and Ms. Shobhana. Invite Mr. R. Dinesh, Chairman of TVS Supply Chain Solutions, and request him to kindly deliver his address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, dignitaries on the dais, friends, a very good evening and a warm welcome to all of you. Honorable Prime Minister, it is my great privilege and honor to extend a special and warm personal welcome to you. A welcome on behalf of the TVS family, a welcome on behalf of the industry, especially all the retailers
the garage owners, and the transport operators who make up this sector. Honorable Prime Minister, you are taking time out for these MSMEs and the entrepreneurs who have so much to add to the growth and livelihood of the country, shows your personal concern towards creating more opportunities for the people. Your commitment for creating a bright future for all of us. You always encourage entrepreneurs who help create wealth for the nation and who have been able to enhance the livelihood for the new India of today. Having your presence here is a great signal of encouragement, not only to the over 5,000 MSME entrepreneurs who are present here, but also more than the 10 lakh entrepreneurs who are of the automotive aftermarket sector. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Honorable Prime Minister to Madurai with a warm applause. Honorable Prime Minister, we see a clear accelerating trajectory towards the Viksit Bharat under your leadership. Today's forum would help us progress this further. Your dedication and tireless efforts have propelled India towards a brighter future marked by inclusive growth and sustainable industrial development. Sir, TVS has always been a pioneer in working with the mobility and transport sectors that has helped many aftermarket entrepreneurs to grow their business. We at TVS in our various businesses have decided to focus on leveraging low-cost digital solutions to support this sector. We realize that large businesses rely on the MSMEs to improve services and improve the services, keeping the cost down, and hence it is important to uplift and upgrade them to be relevant and future ready. Today, we are able to scale up this model because of the implementation of the Digital India, a unique vision of yours. Sir, globally, the entire logistics and aftermarket ecosystem runs with the medium and small-scale entrepreneurs. It is only in India that such a deep integration of digital solutions are being implemented and adopted at a rapid speed by our MSMEs. Thanks again to your vision. Honorable Prime Minister, it's a singular honor as you launch shortly the TVS Open Mobility Platform. This is open, inclusive, and an interoperable platform which will link the various stakeholders of this ecosystem, including the small MSMEs, the financial institutions, the vehicles and parts manufacturers, the skilling and educational institutions, and the tech startups. It will provide the MSMEs access to resources and create micro-communities which will upgrade themselves. Sir, we are also at this forum shortly going to launch the CII TVS Mobility Center of Excellence with your hands. This is a partnership between the Confederation of Indian Industry, the Apex Industry Body, and TVS Mobility. This Center of Excellence will generate productive livelihood and support scaling up of MSMEs across various sectors, including textiles, food processing, amongst others, much beyond the automotive sector. Honorable Prime Minister, under your guidance, we in TVS and our partners in this ecosystem commit ourselves to provide an inclusive and equitable growth which will enhance the livelihood of the entrepreneurs and more than 1 crore people which are employed in this sector as we move towards a Viksit Bharat. We believe this will become the benchmark for MSMEs globally. Once again, thank you very much. Welcome to the Honorable Prime Minister, and thank you. Thank you, Mr. Dinesh, for your kind address. Ladies and gentlemen, I would like to now invite Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, and request him to kindly deliver his address. TVS Mobility ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக ஆக்கியே காட்டுவோம் என்று ஒரு லட்சியத்தோடு கங்கணம் கட்டி இன்றைக்கு
கதிசக்தி இந்தியாவினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அதிவேகமாக எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு தினேஷ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய திரு அண்ணாமலை அவர்களே, மற்றும் மேடையில் இருக்கின்ற பெரியவர்களே, இங்கு கூடியிருக்கின்ற தொழில்துறையினரே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைக்கு பாரத தேசம் எவ்வளவு வேகமாக இந்த கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மிக வேகமாக முன்னேற்றத்தை கண்டு கொண்டிருக்கிறது. அது ரயில்வேவாகட்டும் அல்லது ஹைவேக்களாகட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டில் விமான நிலையங்கள், சென்னையில் ஒரு பெரிய விமான நிலையம், திருச்சிராப்பள்ளி விமான நிலையம், இப்படி மதுரைக்கு நம்மளுடைய விமான நிலையம், மதுரையிலிருந்து கொல்லத்துக்கு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே, இப்படி பல திட்டங்களை கொடுத்த நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த டிவிஎஸ் நிகழ்ச்சி, டிவிஎஸ் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். டிவிஎஸ் தமிழகத்தில் ஒரு சிறந்த தொழில் நிறுவனமாக, தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குகின்ற நிறுவனமாக இந்த நிறுவனம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுடைய ஒரே ஒரு லட்சியம், 2047 நம்மளுடைய நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இருக்க வேண்டும், இந்த நாடு உலகத்திற்கு வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும், இந்த நாடு புரோகிரசிவ் நாடாக இருக்க வேண்டும். அதற்காக தான் அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய கடுமையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாம் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நல்ல வரவேற்பை கொடுப்பது தமிழுக்கு, ஏன்னா மதுரை தமிழ் சங்கம் வளர்த்த ஊர், தமிழை காத்த பெருமை இன்றைக்கு நம்மளுடைய பிரதமரை சாரும். எங்கு சென்றாலும் தமிழ் பெருமை, தமிழனுடைய பண்பாடு, தமிழனுடைய கலாச்சாரம். அதனால தான் புதிதாக கட்டிய பாராளுமன்றத்தில் நம்மளுடைய பிரதமர் அவர்கள் செங்கோலை, தமிழனுடைய நீதி பரிபாலனத்திற்கான செங்கோலை அங்கே நாட்டினார்கள். அதே போல திருக்குறளை கிட்டத்தட்ட 35க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து திருக்குறளை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்ற பெருமை நம்மளுடைய பிரதமரை சாரும். அதே போல அவருடைய தொகுதியில் காசியில் பாரதியாருக்கு ஒரு இருக்கை அமைத்து கொடுத்த பெருமை நம்மளுடைய பிரதமரை சாரும். அது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டினுடைய தொழில் வளர்ச்சி, தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சியை நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் பேச வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Thank you, Honorable Minister, for your kind address. May I now request our Honorable Prime Minister to kindly launch the TVS Open Mobility Network platform. In the heart of innovation, tradition meets technology. Bharat's digital revolution has been the backbone of its knowledge-based economy, boosting growth, creating jobs, and improving productivity. With Honorable Prime Minister's vision for Viksit Bharat, TVS proudly presents the Open Mobility Platform, a revolutionary step towards empowering Indian MSME entrepreneurs. This promises to create interoperability amongst ecosystems for boosting scale, business confidence and growth. Our platform unlocks the potential of next generation of entrepreneurs by providing opportunities for skill development. It connects Indian parts manufacturers with global buyers, integrating them with global supply chains to support Make in India. My TVS, one of the largest automotive aftermarket ecosystems across garages, retailers and fleet owners, will give MSMEs access to future-ready digital solutions to scale up. TVS Open Mobility offers low-cost capital, empowering young entrepreneurs to turn their visions into reality and integrating MSME entrepreneurs into mainstream funding. It introduces an alternative credit model for automotive players and speeds up the EV ecosystem. TVS is proud to have created deep, sustainable partnerships across sectors, integrating different verticals from skill building to fintech, manufacturing, technology and more. As we unveil the TVS Open Mobility Platform today, we are carrying forward the vision
of our Honorable Prime Minister to empower and create opportunities for MSMEs. Together, we redefine the future of the Indian MSME entrepreneur. Thank you, Honorable Prime Minister. And inspired by the Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, the Confederation of Indian Industry is establishing the CII TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood. Ladies and gentlemen, this center is dedicated to fostering the growth of Indian MSMEs. May I please request Mr. Chandrajit Banerjee, Director General CII, to kindly present the plaque to our Honorable Prime Minister, requesting Mr. R. Dinesh to also kindly join. Ladies and gentlemen, we now have the short film on the center. Can we play the film, please? Since 1995, CII has set up 10 centers of excellence dedicated to driving competitiveness, productivity and sustainability of Indian enterprises. With over 63 million enterprises, the Indian MSME sector is amongst the largest in the world today. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। multiple policies and initiatives have been launched by the Government of India to empower MSMEs with technology, finance and access to markets. Some of the transformational initiatives include the PM Vishwakarma Yojana, Mudra Yojana, the Prime Minister Employment Generation Program, amongst many others. Inspired by Honorable Prime Minister's vision of Viksit Bharat, the Confederation of Indian Industry is establishing the CII, TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood, as a transformative initiative to bolster the resilience, self-reliance and competitive spirit of Indian MSMEs. Prioritizing the micro, small and medium enterprises, the Center of Excellence under CII will be based in Madurai, Tamil Nadu, with sub-offices across the country. The center will identify promising small enterprises, offer mentorship and training, and create an ecosystem of innovation and entrepreneurship. Reaching out to enterprises with turnover in the range of 50 lakh rupees to 10 crore rupees, the CII Center targets covering 1 million enterprises and building livelihoods of 10 million people, including youth and women, by 2030. The CII TVS Mobility Center of Excellence on Employment and Livelihood, aiming towards being India's largest coalition of organizations engaged in developing and growing Indian MSMEs. And now, ladies and gentlemen, it is that moment that we have all been waiting for, to hear our Honorable Prime Minister. And with these words, I request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his special address. वणक्कम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे आने में देर हुई और आपको काफी इंतजार करना पड़ा। मैं सुबह दिल्ली से तो समय पर निकला था, लेकिन अनेक कार्यक्रम करते करते हर कोई 5-10 मिनट ज्यादा ले लेता है, तो उसी का परिणाम है कि जो लास्ट वाला होता है उसको सजा हो जाती है। तो मैं फिर भी देर से आने के लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं।
साथियों, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड के इतने सारे माइंड्स के बीच आना, ये अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भविष्य को गढ़ने वाली किसी लेबोरेटरी में आया हूं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। मुझे खुशी है कि आपने इस इवेंट को भी क्रिएटिंग द फ्यूचर ये नाम दिया है। क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव MSME एंटरप्राइजेस। मैं इस कार्यक्रम के लिए इतनी बड़ी संख्या में MSMEs को, हजारों प्रतिभाशाली युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए TVS कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है इस प्लेटफॉर्म से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण को भी गति मिलेगी। मैं समझता हूं कि साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी कुल जीडीपी का 7% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। जीडीपी में 7% भागीदारी यानी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर ही रफ्तार नहीं देते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को भी उतनी ही रफ्तार मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देने में भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रोल बहुत अहम है। साथियों, जो योगदान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देश की इकोनॉमी में है, वही भूमिका MSMEs की इस इंडस्ट्री के लिए है। भारत में हर साल 45 लाख कार उसका प्रोडक्शन होता है। भारत में करीब 2 करोड़ टू व्हीलर, 10 लाख कॉमर्शियल व्हीकल और 8.5 लाख 3 व्हीलर्स भी बनाए जाते हैं। आपसे अच्छा और कौन जानता होगा कि किसी भी पैसेंजर व्हीकल में 3 से 4 हजार पार्ट्स होते हैं। यानी हर दिन ऐसे वाहनों को बनाने के लिए लाखों पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और इस सप्लाई का बहुत बड़ा जिम्मा हमारी लाखों MSMEs ही उठाती है।
इनमें से ज्यादातर टियर 1 और टियर 2 शहरों में है। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमई के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमईज को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरतापूर्वक स्वीकार करना होगा। और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला होगा। और जब मैं जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट कहता हूं तब जीरो डिफेक्ट उसकी क्वालिटी से जुड़ा है एंड जीरो इफेक्ट एनवायरनमेंट पर कोई विपरीत इफेक्ट नहीं करेगा। ये मूल मंत्र को लेकर चलना पड़ेगा। साथियों, डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई एंटरप्रेन्योर से देश के लघु उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, भविष्य के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। साथियों, कोरोना के समय दुनिया ने भारत के लघु उद्योगों का सामर्थ्य देखा है। भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो विजय हासिल की, उसमें लघु उद्योगों की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए आज देश एमएसएमई के भविष्य को देश के भविष्य के तौर पर देख रहा है। पैसे से लेकर प्रतिभा तक एमएसएमई के संसाधनों में वृद्धि हो, इसके लिए चौतरफा काम हो रहा है। पीएम मुद्रा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना ये ऐसी योजना है जो इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोरोना के समय में एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम ने लाखों रोजगार, और वो संकट का काल है, आप याद रखिए, लाखों रोजगार बचाने में आपके एमएसएमई सेक्टर ने मदद की थी। साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी, और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमईज को नई टेक्नोलॉजी
और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है और मेरी पूरी समझ है कि भावी गढ़ने में स्किल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रेडेड होने वाली स्किल्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां बहुत आवश्यक है। साथियों, सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए है और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा, रूफटॉप सोलार से ही चलेगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होने वाला है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है। साथियों, सरकार ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम बनाई है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसकी मदद से हमने 100 से ज्यादा एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ावा दिया है। जब देश में नई टेक्नोलॉजीज आएगी तो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ये भी हमारी एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए ये सही समय है कि हमारी एमएसएमई क्षमताओं का विस्तार करें, नए क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। साथियों, जहां संभावनाएं होती हैं, वहां चुनौतियां भी होती है। आज डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स और मार्केट डिमांड फ्लक्चुएंस जैसी कई चुनौतियां एमएसएमई के सामने है। सही समय पर और सही दिशा में सही कदम उठाकर हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसके लिए खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही
एमएसएमई का फॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हमने एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला है। इस फैसले के बाद एमएसएमई की ग्रोथ के रास्ते साफ हुए हैं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भारत सरकार अपनी हर इंडस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पहले इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल, छोटी सी छोटी बात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज सरकार हर सेक्टर की समस्याओं का समाधान कर रही है। बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा, मोर देन 40,000 कंप्लायंसेस समाप्त किए हैं। हमने बिजनेस से जुड़ी अनेकों छोटी छोटी भूलों को डीक्रिमिनलाइज भी किया है। वरना आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में ऐसे कानून थे कि अगर आपकी फैक्ट्री में टॉयलेट को 6 महीने में एक बार कलर नहीं किया तो आपको जेल भेजते थे। ये सब मैंने निकाला और इसको निकालने में 75 साल गए देश के। साथियों, नई लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, जीएसटी हो, इन सभी से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लघु उद्योगों को भी मदद मिली है। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। हम हर इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म को भी विकसित करने के पर बल दे रहे हैं। मैं ऑटोमोबाइल, एमएसएमई सेक्टर से भी कहूंगा कि इस सपोर्ट मैकेनिज्म का लाभ लें। इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस को आगे बढ़ाकर हमें जाना ही होगा। सरकार पूरी तरह आपके साथ है। मुझे विश्वास है इस दिशा में टीवीएस का प्रयास आपको जरूर सहायता करेगा। साथियों, 2-3 बातें और भी मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है कि भारत सरकार ने स्क्रैप को लेकर के एक पॉलिसी बनाई है। हम चाहते हैं कि जितने पुराने व्हीकल्स हैं वो स्क्रैप हो और नए आधुनिक व्हीकल्स मार्केट में आए। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए मैं आप उद्योग जगत के लोगों को भारत सरकार की ये स्क्रैपिंग की पॉलिसी का फायदा उठा करके स्क्रैपिंग की दिशा में आगे आना चाहिए। अब हमारा देश शिप ब्रेकिंग में दुनिया में नंबर 1 रहा है और शिप ब्रेकिंग का रिसाइकल मटेरियल उसका बहुत बड़ा मार्केट बना है। मैं मानता हूं अगर बड़ी योजना पूर्वक हम आगे आए तो हमारे पड़ोसी देश भी, उनके व्हीकल्स भी, गल्फ कंट्रीज जहां बहुत तेजी से व्हीकल बदले जा रहे हैं, वो भी स्क्रैप के लिए भारत आकर के एक बहुत बड़े उद्योग की संभावना है और वो सारी चीजें किसी न किसी रूप में आपके एमएसएमई के लिए काम की है।
हम इस पूरे चीजों का कैसे फायदा उठाएं। उसी प्रकार से मुझे अभी बताया गया कि इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी हैं। मैं कोई भी चीज जब सोचता हूं तो मैं उसकी पूर्णता के आधार पर सोचने की आदत रखता हूं। अगर मैं मोबिलिटी की चर्चा करूंगा, ट्रांसपोर्ट की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं मेरे ड्राइवर की चर्चा नहीं करूंगा, उसकी चिंता नहीं करूंगा, तो मेरा काम बहुत अधूरा है। और इसलिए आपने कुछ दिन पहले आपने शायद अखबार में पढ़ा होगा, हमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम 1000 प्लेसेस सेंटर्स मेन हाईवेज पर अभी बनाने वाले हैं, जिसमें ड्राइवर्स के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और उसके कारण एक्सीडेंट्स कम होंगे, उसको रेस्ट मिलेगा, आवश्यक सुविधाएं उसको प्राप्त होगी और प्रारंभ में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के 1000 ऐसे सेंटर्स बनाने का काम ऑलरेडी हम शुरू कर रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मेरे भाई बहन हैं, उनको अपने ड्राइवर्स को और अधिक सुरक्षा भी, संतोष भी और आपके कारोबार को विकास करने के लिए नए अवसर, ये सारी चीजें एक साथ उसे जुड़ी हुई है। साथियों, आप सबके बीच आने का अवसर मिला। अनेक आकांक्षाएं आपकी भी हैं, अनेक सपने आपके भी हैं और आप सबके सपनों को मैं मेरे संकल्प बना करके जी जान से जुटा रहता हूं। भरोसा कीजिए, आपके जो 5 साल के जो भी प्लान होंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपके लिए रहूंगा, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के रहेंगे। आप सभी का एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, Honorable Prime Minister, for your kind and inspiring words and giving a boost and direction to our MSMEs. Ladies and gentlemen, with this, we once again express our heartfelt thanks to Honorable Prime Minister for his time and gracious presence here. May I request all to kindly... सीधा प्रसारण आप तमिलनाडु के मदुरई से देख रहे थे, जहां पर at a program in Tamil Nadu's Madurai, where he addressed micro, small and medium enterprises, entrepreneurs of the automotive sector in Madurai, which is quite extensive, and the PM had a lot of encouraging words for the automotive sector there in Madurai, and he recounted how the course of 10 years when he's been in power, his government has brought out various schemes, mentioning PLI scheme, mentioning the Mudra Yojana, other schemes to give easy credit and working capital to the MSME sector. He said how the MSME sector remained resilient even during tough COVID times, saved a lot of jobs. He mentioned lakhs of jobs were saved, and he also said that there will be other multiple steps being taken through the course of the next 5 years around, where he assured people that he will still be around to ensure that this sector keeps progressing. He just said that he just wants zero defect, which is no defect in the products, and zero effect as in no environmental impact going forward as far as this automotive MSME sector is concerned. For more news and updates, keep watching DD India. अरे ठीक से रैप भी नहीं करने देते।